आज ओडिशा रे प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट भूमि पूजन होउछि। आपण मानक बहुत बहुत शुभेच्छा। विशेष धन्यवाद देउछि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तांकर पूर्वोदय स्वप्न रे से ओडिशा और आसाम को सेमीकंडक्टर भाया गोटे एडवांस टेक्नोलोजी रो प्लांट देइछथि। मु बहुत धन्यवाद देउछि ओडिशा रो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी को आपणकर बहुत एथिरे एफर्ट है आज ये स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। बंधुगण, मोदी जी जहाँ प्रॉमिस करिसेंती ताहा से डिलीवर करिसेंती। आपण देखुछंती डबल इंजन सरकार रे प्रत्येक क्षेत्र रे ओडिशा रे डेवलपमेंट होउछि। रेलवे हो, हाईवे हो, पोर्ट सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर है, टेलीकॉम हो, प्रत्येक क्षेत्र रे ए डबल इंजन सरकार रे सबुदिन डेवलपमेंट रो गोटे नुआ विकास रो गोटे नुआ चैप्टर खोला जाउछि। आपण जहाँ आमर स्वप्न थिला जे ओडिशा रे एडवांस टेक्नोलॉजी रो इंडस्ट्री आसु से स्वप्न आज पूरण हेबाक जाउछि। और विशेष ध्यान रखाई हेछि जे केमिति आमे इंडस्ट्री और एकेडेमिया को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करिबा। आईआईटी भुवनेश्वर रे गोटे रिसर्च लैब तैयार करा जाउछि, सेमीकंडक्टर रिसर्च लैब। मते गोटे सौभाग्य मिलिला 5 कोटी टंका एमपी लैड रो आईआईटी भुवनेश्वर को दिया हेछि नमो सेमीकंडक्टर लैब एस्टाब्लिश करबा पर। सेही भली आपण देखछंती जे गत 10 वर्ष भितरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत रे बहुत बड़ो गोटे इंडस्ट्री है कि बाहर। Electronics manufacturing has grown 6 times in the last 11 years. Electronics exports have grown 8 times in the last 11 years. आज electronics exports third largest exported item है। ओडिशा को भी ए इंडस्ट्री रे जेमिति इम्पोर्टेंस मिलू से फोकस जोगु आज सेमीकंडक्टर प्लांट उठी लगी पार। ओडिशा सरकार को पाखरे गोटे निवेदन रखी माननीय मुख्यमंत्री जी को पाखरे जे अति अग्रेसिवली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपना परस्यू करतु आम सहित कंप्लीट सपोर्ट रहिबो। और या पई जेकोसी पॉलिसी आनिबा को दरकार पड़िबो किंबा जेकोसी रिफॉर्म्स करबा को दरकार पड़िबो से सब रिफॉर्म्स मिसिकी करबा so that our people in Odisha can get the benefit of high-tech electronics manufacturing. Data center is coming up as a major industry. We have recently seen almost all big tech companies in the world want to set up data centers in India. And that's because of the talent pool that we have. I will request the government of Odisha to have a data center policy which will focus on providing electricity at very reasonable rates, good water supply and good accessible roads and other infra. When that happens, many data center companies would like to set up their bases in Odisha. We also have a huge scope for undersea cables. Andaman and Nicobar can become a data center hub, an internet hub, the way Singapore became in the past century. Andaman and Nicobar can provide undersea cable connection to the eastern coast at 3 places, down south, somewhere in the middle and somewhere up north. Then it can provide undersea cable connection to Myanmar, which will then connect to our northeastern states over land. Then it can go to the Southeast Asian countries, to Singapore and to Australia. So this is a big opportunity in which Odisha will find huge potential in the coming years. Friends, AI is also becoming a major game changer in our generation. We will start many facilities in Odisha where AI training can happen. जेमती आप देखिले सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग पाई we gave huge grants and huge facilities in colleges
in Odisha, entire country रे 298 universities अच्छी जो थे semiconductor training दिया जाऊँ. I am very happy to say 2 of our colleges in Odisha, Rourkela and Berhampur, the students have manufactured and designed chips. It's a matter of pride for us, it's a matter of satisfaction for us, and we should take this journey forward at a very fast pace. As always, I would like to thank Honorable Chief Minister for the great support he is giving in the electronics industry. I would like to thank Honorable Prime Minister for his vision for the eastern states. Great support he has given. Continuously he has been asking us to have more and more development in the eastern states. Friends, महाप्रभु जगन्नाथन को यही कृपा सबुदिने आम समस्त उपरे होता हो।